Hello viewers, I am Tarang Kumar Boonwal, Assistant Professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon. The following video is prepared as per the syllabus and course outline of Maharshi Dayanand University. However, are mostly general topics which cover the working and theoretical aspects of civil engineering. For better understanding and conceptualizing clearly, please do not skip the video and watch till end. We will be discussing about related important questions, feasibility and applications. Let's start the video. Hello everyone. Hello students. Welcome back to the channel. Today in this subject engineering geology, we'll continue with unit 2 and the topic of discussion today would be earthquake. As we all know, earthquake is an internal force that causes geological changes in earth's structure. So we'll start with the subject now. Firstly, we'll discuss the introduction part. So earthquake, sometimes also known as quake, tremor or tremor, is the phenomenon where there is a sudden release of extreme energy from the earth crust, resulting in shaking and displacement of the ground along with the creation of seismic waves. तो जैसा कि डेफिनेशन से पता चलता है, ये एक फिनोमेना है जिसमें कंपन बोलते हैं, भूमि कंपन हिंदी में, ट्रेमर क्रिएट होता है जिससे, और सडन रिलीज ऑफ एक्सट्रीम एनर्जी इसका एक सबसे बड़ा साइन है. और जो टाइप्स ऑफ वेव क्रिएट होती है वो सिस्मिक वेव्स होती हैं. तो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, शेकिंग से लेके डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्रस्ट दोनों पॉसिबल होता है. इफ द एपिसेंटर ऑफ अ लार्जर अर्थक्वेक इज सिचुएटेड इन द ऑफशोर, दैट इज सी और ओशन, सीबेड में बी डिस्प्लेस्ड सफिशिएंटली टू कॉज सुनामी. अगर किसी समुद्री तट पे, ओशन बेस में अगर अर्थक्वेक अकर होता है, तो अगर वो सफिशिएंट है सी बेड को डिस्प्लेस करने के लिए, तो वो एक सुनामी कॉज कर सकता है. इट ऑल्सो ट्रिगर्स लैंडस्लाइड्स एंड ओकेजनली वोल्केनिक इरप्शंस. तो वोल्केनो और अर्थक्वेक्स इंटीग्रल हैं, दोनों एक दूसरे से समहाउ कनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर सकते हैं. Earthquake shaking may cause loss of life and destruction of property. In a strong earthquake, the ground shakes violently. Buildings may fall or sink into the soil rocks, and soil may move downhill at a rapid. Such landslides can bury houses and people. तो ये सब तो hazards हैं earthquake के. Now definition. So earthquake is vibration of the earth produced by the rapid release of energy. तो ये जो rapid release of energy है जिस वजह से ये vibration create होती है वो earthquake. Waves. These are energy moving outward from the focus of an earthquake. तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये फोकस है. अगर अर्थक्वेक का यहाँ से इवॉल्व हुआ, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो इससे जो बाहर की तरफ एनर्जी रिलीज हो रही है वो सब सिस्मिक वेव्स हैं. सो फोकस of initial slip on the fault where the earthquake origin. So it is the initial point on the fault line where the earthquake origins. Epicenter, spot on earth surface directly above the focus. तो जो जहां पे अर्थ सरफेस के नीचे, क्रस्ट के नीचे जहां पे ओरिजिनेट हुआ है अर्थक्वेक, उसके ठीक ऊपर सरफेस पे, अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी एरिया है वो उसका एपिसेंटर कहलाता है. So as you can see in the diagram, fault line जहां से कॉज हो रहा है, ये इमीडिएट पोजीशन जहां पे अर्थक्वेक का फोकस है, जहां से इमर्ज हुआ है अर्थक्वेक. तो सिस्मिक वेव्स ऐसे हर डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो दीज आर सिस्मिक वेव्स. इसके इमीडिएट नीचे, फोकस के इमीडिएट नीचे फॉल्ट प्लेन होता है, जो सरफेस है वो एपिसेंटर है, और ये फॉल्ट स्क्रेप एंड ये फॉल्ट ट्रेस जो कि ग्राउंड के सबसाइड होने के बाद क्रिएट हुआ है.
So why do earthquakes occur? They can occur due to geological faults, volcanic eruptions, mine blasts, and nuclear tests. Above two are natural, while the bottom two are man-made. Fault is a planar fracture or discontinuity in a volume of rock across which there has been significant displacement. तो एक significant amount का अगर displacement हो जाता है तो वो ही एक geological fault है. There are three main types of fault, namely normal fault, thrust fault, and strike slip fault. Normal fault. Normal fault occurs when the crust is extended. The hanging wall moves downward relative to the foot wall. तो कुछ इस केस में crust का extension दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे जाने की कोशिश ये हैंगिंग वॉल डाउनवर्ड्स रिलेटेड टू द फुट वॉल, ये कंपैरेटिवली ये नीचे जा रहा है. Next is thrust fault. A thrust fault occurs when the crust is compressed. ये extension नहीं compression का केस होता है. The hanging wall moves upward relative to the foot wall. तो जो hanging wall है वो foot wall के comparison में ऊपर जाने की tendency होती है. Strict slip fault. The fault surface is usually near vertical and motion results from shearing force. तो ये स्लिपिंग एक्शन होता है, यहाँ पे शेयर फोर्सेस जनरेट होती है, तो इसको स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं. आप देख सकते हैं वोल्केनो क्रिएशन बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक. So classification of earthquake based on their magnitude. If magnitude is greater than or equal to 8, then these are great earthquakes. If magnitude is greater than and equal to 7 but less than 8, then major or large earthquake. If magnitude is equal to 5 or less than 5, is greater than or less than greater than or equal to 5 and less than 7, then it is moderate earthquake, and so on. You can see by pausing the video. So earthquake based on distance. If distance occurrence of earthquake is more than 1000 kilometers, then it is teleseismic earthquake. If it is greater than 500 kilometers, then regional earthquake. If less than 500, then local earthquake. So effects of earthquake. Primary earthquake hazards, rapid ground shaking. This is we know since very early times. Structural damage and buckled roads and rail tracks. Secondary earthquake hazard is landslide and avalanches. Both are the forms of ground sliding. Then there is alteration to water courses. लैंडस्लाइड की वजह से कई बार रास्ता नदियां रास्ता बदल लेती हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं. रिवर का मूवमेंट ऐसा था, नीलम रिवर, मुजफ्फराबाद, earthquake, it changed its path. Landslide. In some cases, there could be fire resulting from an earthquake. So tsunamis. Sea waves, tidal waves can grow up to 65 meters. So measuring earthquakes, seismometers are used, instruments that detect
टाइप है, जैसे अर्थक्वेक आता है तो ये जो बॉब इंक्ड होता है और ये यहाँ से ये पेपर मूव करता रहता है और जिस जिस तरीके से ग्राउंड का मोशन होता है इस पे इंटेंसिटी रिकॉर्ड होती जाती है मोशन की। सिस्मोग्राफ, इट रिकॉर्ड्स इंटेंसिटी, हाइट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। तो जो भी वेव्स होती हैं उसको ये रिकॉर्ड करता है और वही सिस्मोग्राफ होता है। दिस होल असेंबली इज सिस्मोमीटर एंड द ग्राफ प्लॉटेड इज सिस्मोग्राफ। So as we can see, it is a graph between the waves and the time. So initially it is primary wave, then it becomes secondary wave. Measuring the size of earthquake. So magnitude is measured by Richter scale. It measures the energy released by fault movement. Second, logarithmic scale is quantitative measure. Intensity is measured by Mercalli scale. It assigns an intensity or rating to measure an earthquake at a particular location, which is qualitative. Measures the destructive effect. Then intensity is a function of energy released by fault, geology of the location. सरफेस सबस्ट्रेट्स भी कई बार वेव्स को मैग्नीफाई थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देते हैं, एक रेजोनेंस टाइप का इफेक्ट क्रिएट करते हैं। Earthquake monitoring. So it is necessary to identify the fault lines. See, these are fault lines. You can see the ground has slipped from here till here. Next is earthquake monitoring by remote seismograph position. Scientists consider seismic activity as it is registered on a seismometer. A volcano will usually register some small earthquakes as the magma pushes its way up through cracks and vents in rocks. As a volcano gets closer to erupting, the pressure builds up in the earth under the volcano and the earthquake activity becomes more and more frequent. तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, earthquake और volcano दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। Analog image. So this is an image of an analog recording of an earthquake. The relatively flat lines are periods of quiescence and the large and squiggly line is an earthquake. तो ये जो इमेज उसकी क्रिएट हो गई एनालॉग की, ये जो मोशन है यही ग्राउंड के मोशन का रेप्लिका, उसी को ट्रेस करके ये फॉर्म किया जाता है। Digital seismogram. Below is a digital seismogram. The data is stored electronically, easy to access, and much more accurate and detailed than the analog recordings. तो ये कंपैरेटिवली एनालॉग के मुकाबले इसके अंदर हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट जोन्स पता चल, और इसमें हम ज़्यादा अच्छे से अपने रिजल्ट्स को एनिपुलेट एंड इंटरप्रेट कर पाते हैं। Monitoring by tilt meter. So tilt meters attached to the slides of a volcano detect small changes in the slope of a volcano. तो वोल्केनो जो ज्वालामुखी जो होता है उसकी साइड्स पे इसको, when a volcano is about to erupt, the earth may bulge or swell up a bit. तो जो बल्जिंग होती है अर्थ की वो इसके थ्रू पता चल जाती है कि यहाँ पे अर्थ बल्ज हो चुकी है और ये अर्थक्वेक से ट्रिगर होके वोल्केनो इरप्शन का टाइम आ चुका है। And it can be monitored by checking changes in the groundwater level. Hydrogeological responses to large distant earthquakes have important scientific implications with regard to our Earth's improves our insights into the responsible mechanisms and may improve our frustratingly imprecise ability to forecast the timing, magnitude and impact of Earth.
So it can also be observed by observing strange behaviors in animals. The cause of unusual animal behavior seconds before human feel an earthquake can be easily explained. Very few humans notice the smaller P waves that travel the fastest from the Earth's source and arise before the larger S waves. कम लोग होते हैं जो P waves जो earthquake के initial tremors होते हैं उनको feel कर पाते हैं. हर कोई उस चीज को भी feel नहीं कर पाता है. But many animals with even more keen senses are able to feel the primary waves seconds before the S waves arrive. और कुछ होते हैं जो प्राइमरी जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्राइमरी वेव्स को बहुत ज्यादा अच्छे से सेंस कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास नेचुरल सेंसेस अवेलेबल हैं. Indeed, it's possible that some animal could sense these signals and connect the perception with an impending earthquake. और ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत सारे जानवर होते हैं जो कि उनके सेंसेस एंड सिग्नल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अर्थक्वेक के साथ अपना एक परसेप्शन एक पूरा कनेक्शन डेवलप कर पाते हैं और वो उसको पता लगा पाते हैं कि it is about to occur. So seismic waves are of two types as we saw in the diagram in the earlier slides. First is primary wave, next is secondary wave. So we'll learn about primary waves here. These are called compressional or push-pull waves. This is its another name, compressional waves or push-pull waves. They propagate parallel to the direction in which the wave is moving. So if wave is moving in this way, then they also move in this way. The propagation direction is parallel to the direction of the motion of wave. They move through solids and liquids. Ground is shaking this way, from here this way in zigzag motion, and waves are traveling in this way. These are called shear waves. They propagate in the movement perpendicular to the direction in which the wave is moving. So if the wave is moving like this, then there is a movement of ground in this way. The movement of propagation of earthquake is on horizontal plane and this is on vertical plane. So they are perpendicular to each other. Next is surface waves. These are known as complex motion waves. Ups and downs and side to side. So they occur in a combination of both. Sometimes side to side, then up and down, then again side to side. They are very slow and slowest when compared to all the three types of wave. Most damage to the structures and buildings. So they are the reason they cause the major damage to the structures and buildings. Surface waves are responsible for this. So next topic is impacts of earthquake prediction. So earthquake prediction is based on the points discussed here. First is property related changes. So the primary factor that comes up is declining property values. क्योंकि earthquake जिस भी locality में होता है, जो भी areas earthquake prone होते हैं, तो property declination वहाँ पे होता ही है. And eventually this causes a decline in property tax revenues. तो क्योंकि property values कम होती हैं तो property tax revenues भी automatically कम हो जाते हैं. Next is financial changes. So this causes reduced availability of insurance, reduced availability of mortgages, change in investment patterns. Insurance availability कम होती है क्योंकि उस एरिया में इस तरीके के लॉसेस होना और अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है, तो इंश्योरेंसेस वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाते हैं रेडीली. मॉर्टगेजेस भी डेफिनेटली इसी वजह से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स भी स्टैगर्ड होता है. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन मूवमेंट. अगर अर्थक्वेक की सीवियरिटी कम हो
तो टेम्पररी रिलोकेशन होता है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज एंड सिटीजन्स। पर अगर अर्थक्वेक की सीवियरिटी ज्यादा हो, then it could cause permanent relocation, like for all employers, employees and citizens. Availability of evacuation centers, evacuation urged in high risk areas, avoidance of hazardous areas of the city. तो population movement ये सब चीजों को ट्रिगर करता है कि वहां पे इवैक्यूएशन सेंटर्स को डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, और हाई रिस्क एरियाज में ज्यादा जरूरत होती है, and hazardous areas are avoided. Next is level of business activity. There is definitely going to be a cessation of work activity because earthquakes are not certain to happen. Their prediction is not very foolproof as of now. So it becomes very difficult to carry out all the work related activities on timely basis. Due to this reason, there is an decline in employment opportunities, which definitely has to because of all these factors. Then there is decline in level of business activity, which is also linked to the above 2 points. Preparedness, organization and education. Preparedness training and information. So it is given to the people which are residing in such areas. Stress on preparedness organization, और जो तैयारी करने वाली organizations होती हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. Then release of damage assessment maps. फिर उसके बाद जो भी एक्चुअली हो चुका है तो उनके लिए असेसमेंट मैप्स रिलीज किए जाते हैं, जिनके थ्रू उनको और ज्यादा ट्रेन किया जाता है वहां के रेजिडेंट्स को. देन देयर इज रीशेड्यूलिंग ऑफ पब्लिक इवेंट्स, क्योंकि अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन है तो कोई भी इवेंट्स को उस अर्थक्वेक की एक्टिविटी के दौरान नहीं किया जाएगा, तो उसको रीशेड्यूल किया जाता है. देन देयर इज रिडक्शन इन पब्लिक सर्विसेज, तो पब्लिक सर्विसेज में भी कमी आती है इसी वजह से. So this is a case study, not a case study, but just a overview of the map of how this Burj earthquake. So it is a graphical case study basically, where you can see this is Burj situated in Gujarat, and from Burj the epicenter originated, the earthquake originated, which caused so many casualties, loss of life and property. The reason being soft story building, soft story approach of building was used there, so it caused a lot of damage there. So I hope you guys could understand today's topic well, and you are now comfortable with types of waves, differences between these waves, which wave is the strongest, different magnitudes of earthquake, seismographs, seismograms, and if in case you have any doubt or any query, feel free to contact me via my email address given at the end of the video. Till then, have a great time and we'll meet in the next lecture. Bye. I hope you guys could understand and correlate the topics taught in today's session. If there is any query or subject matter issue, feel free to mail me at the given email ID. Live discussion sessions could also be used for discussion of doubts. Thank you.